हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट होता 2024 रे तार क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। तेणु खाली क्वेश्चन एवं तार आंसर नुहे जो एक्सप्लेनेशन सहित डिस्कसन करवा। तेणु एथरे टोटाल अच्छी पिला माने 80टी क्वेश्चन देखिनि। यही 80टी क्वेश्चन को एका संगे तो आम कर ना। 80टी क्वेश्चन एका संगे डिस्कसन कले बहुत समय लगे। तेणु पिला माने मु को पार्ट पार्ट करी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जितेटा पार्ट हो पार। तेणु मो सांगे मो चैनल सहित कांटेक्ट लिंक रे रुहंती एवं कौन करिवो ना वीडियो को भल भाव में देखिबो, जहाँकि तुमर बहुत काम रे आसीबो। भल भल इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं एक्सप्लेनेशन मध्य दिया है। जो एक्सप्लेनेशन के अलग क्वेश्चन पाई तुम मन भी मध्य उपयोगी हो पार। अलग परीक्षा जो सब दब तुम एसएसबी दे पार, एमपीजी एंट्रेंस आर वर्ष को दे पार नेक्स्ट ईयर। तेणु बीएड एंट्रेंस दे पार। तेणु युड़िक बहुत भल भल क्वेश्चन सब अच्छी और तार एक्सप्लेनेशन गुड़िक बहुत यूजफुल। तेणु चलो वीडियोटी स्टार्ट करवा। वीडियोटी स्टार्ट करने पूर्व जो मैंने मो चैनल नुआ अच्छ से रिक्वेस्ट है चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो एवं चैनल सहित लिंक सहित सब कांटेक्ट रे रहउथिवो, मो संगे सब जोड़ी होई रहिथिवो। तेणु चलो तार डिस्कसन करवा केमिति करे ना तार एक्सप्लेनेशन गुड़िक मु भल भाव लिखी। चलो पीडीएफ लिंक देदेवी, तुम मैंने नोट प्रस्तुत कर रखिदेव तुम भविष्य। Cpet education 2024 question answer. The first question is the term educator is derived from dash language. तार ऑप्शन गुड़िक हूँ कौन ना रोमान ऑप्शन ए रोमान, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड ऑप्शन डी लैटिन। तेणु कौटार सठिक आंसर ना आर ऑप्शन डी हूँ सठिक उत्तर कौन ना लैटिन लैंग्वेज। तार डेस्क्रिप्शन केमती कराई डेस्क्राइब कराई देख एक्सप्लेनेशन टा ना इटिमोलॉजिकली द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। पिला माने एगुड़ा भल भाव में मन रख। लैटिन वर्ड कौन ना 3 लैटिन वर्ड्स कौन कौन ना एजुकेयर, एजुसेयर एंड एजुकेटम। फास्ट है एजुकेयर, सेकेंड एजुसेयर एंड एजुकेटम। तेणु एजुकेयर मीनिंग कौन ना एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप और टू नरिश। तापर एजुसेयर मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट। आउ एजुकेटर मीन्स टू लीड आउट और टू नो और एक्ट ऑफ टीचिंग। तेणु पिला माने एमिति मध्य क्वेश्चन आसे जे द वर्ड एजुकेयर मीन्स 4टा ऑप्शन देथो टू ब्रिंग अप, टू नरिश, टू ब्रिंग अप और देथो टू नरिश, टू ब्रिंग फोर्थ और टू लीड आउट। ये 4टा ऑप्शन देथो। तेणु एजुकेयर जब थी ताले कौन लिखिबो टू ब्रिंग अप और टू नरिश। ब्रिंग अप जहाँ नरिश सैया। तेणु ये हूँ तार एक्सप्लेनेशन। यही गुड़िक पिला माने भल भाव मन रखिथव। एजुकेयर, एजुसेयर, एजुकेटम हूँ कौ वर्ड्स ना लैटिन वर्ड्स। एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग अप और नरिश, एजुसेयर मीन्स टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रैग आउट, एजुकेटर मीन्स टू लीड आउट और टू नो और एक्ट ऑफ टीचिंग। तापर सेकेंड क्वेश्चन अच्छी कौन ना एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ डैश। एपिस्टेमोलॉजी इज थ्योरी ऑफ ऑप्शन ए हूँ लैंग्वेज, ऑप्शन बी हूँ नॉलेज, ऑप्शन सी हूँ रियलिटी एंड ऑप्शन डी हूँ वैल्यू सिस्टम। तेणु यार सठिक उत्तरटी हूँ कौन ना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज। एपिस्टेमोलॉजी आमर जो रही ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक। तार को ब्रांच क्या बुझाए ना मेटाफिजिक्स इज द थ्योरी ऑफ रियलिटी, एक्सियोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ वैल्यू एंड लॉजिक इज द थ्योरी ऑफ ट्रुथ और रीजनिंग। बुझीपार पे भल भाव नोट प्रिपेयर करदेव। तेणु नेक्स्ट ईयर आ भर निश्चय गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीपे। दिस इज द इंपोर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट सीपेट एग्जाम एजुकेशन। तापर क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी कौन ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स इन द डुअल नेचर ऑफ रियलिटी। तो नंबर क्वेश्चन 3 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी बिलीव्स इन द डुअल नेचर ऑफ रियलिटी। ऑप्शन ए अच्छी सांख्य, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी जैनिज्म एंड ऑप्शन डी आइडियालिज्म। तेणु तार सठिक आंसर होची कौन ना सांख्य। ऑप्शन ए सांख्य। सांख्य डुअल नेचर ऑफ रियलिटी जो आम कहे पुरुष एवं प्रकृति ता उपरे डिपेंड करे बा बिलीव करे।
तार एक्सप्लानेसन होची सांख्य इज ए डुअलिस्टिक ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी रियलिटी कंपोज्ड ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल्स सच एज पुरुष एंड प्रकृति पुरुष मीन्स कॉन्शसनेस और स्पिरिट एंड प्रकृति मीन्स नेचर और मैटर इंक्लूडिंग द ह्यूमन माइंड एंड इमोशंस पिला माने बुझी पारलो तेणु सांख्य फिलोसफी बिलीव्स इन डुअल नेचर ऑफ रियलिटी दैट इज पुरुष एंड प्रकृति. The next question is, which of the following philosophy prescribes strict discipline for students? Strict discipline for students. The first option is naturalism, second option is pragmatism, third option is idealism and D ବା last option is none of these. ପିଲାମାନେ ଆର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ସି ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍. ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଅର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍. ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ. ତେଣୁ ଆଇଡ଼ିଆଲିଜିମ୍ର ହେଲା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ର ହେଉଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି କ'ଣ ନା ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍. ତାପରେ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ. Integral education was advocated by option A Gandhi, option B Gopabandhu, option C Tagore, option D Sri Aurobindo. तेणु यार सठिक आंसरटी होची कौन ना ऑप्शन डी श्री अरविंद. इंटीग्राल एजुकेशन किए करते ना श्री अरविंद करते. बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख आउ इनफॉरमेशन मुझे बेसिक एजुकेशन एडवोकेटेड बाय गांधीजी, शांति निकेतन टागोर एंड सत्यवादी वन विद्यालय गोपबंधु. तेणु युड़िक मन रखिदेव. ये क्वेश्चन नेक्स्ट सीपेट्रे आसीपे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन डैश इन एजुकेशनल सेटिंग. ऑप्शन ए पर्सनालिटी, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी बिहेवियर, ऑप्शन डी नॉलेज. एजुकेशनल साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सेटिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बिहेवियर. तेणु पिला माने आमे जानिचे साइकोलॉजी होची कोन ना साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ बिहेवियर. प्रथम आसला साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ सोल, SOUL, psychology the study of soul. The psychologists denied that a group of psychologists they denied that though the soul has no physical existence and no experiment can be done and no opinion can be given on soul. So psychology is the science of soul is discarded. They opine that psychology is the study of mind. As soul has no physical existence, thus mind has no physical existence. They discarded that the psychology is the science of mind is not true. They discarded that, and then another group of psychologists they opined that the psychology is the science of consciousness, and this definition was also discarded. And lastly, the definition that psychology is the science of behavior was acceptable by all the psychologists. Then so psychology is the study of behavior, and we know that पिला माने तुमे पूर्व जानिछ जे what is education. Education is the modification of behavior. So after studying the behavior of the student, the teacher has to modify it or change it. So educational psychology is the study of a human behavior in educational setting. Education and psychology are closely related. Why? Now after studying the behavior of the child or student or learner, the teacher has to modify it. So education is the modification of a behavior and psychology is the study of behavior. Next, question number 7. Object constancy is a concept in option A intellectual development, option B social development, option C physical development, option D moral development. The correct answer is ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्ट कन्स्टांसी आमर जो पियाजेंकर चारिटा डेवलपमेंट रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट ता भितर रही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मध्य कह जाए, मेंटल डेवलपमेंट भी कह जाए. तेणु ऑब्जेक्ट कन्स्टांसी कौथु आसी ना पियाजेंकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट रु आसी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ऑब्जेक्ट तार एक्सप्लेनेशन देख पिला माने ऑब्जेक्ट कन्स्टांसी इज द एबिलिटी to recognize that objects do not change simply because we do not see them. Piaget's cognitive development तांकर चारटा स्टेज अच्छी. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज. फर्स्ट स्टेज इज सेंसोरी मोटर स्टेज.
सेंसरी मोटर स्टेज कौन ना 0 to 2 years दैट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस यही स्टेज रो कैरेक्टरिस्टिक्स होची कौन ना ऑब्जेक्ट परमानेंस तापर आसला प्री ऑपरेशनल स्टेज कोठू ना 2 to 7 years तापर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होची 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होची 12 to onwards तेणु एगुड़िक सब तार डिफरेंट स्टेज रो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सब रही तेणु ऑब्जेक्ट परमानेंस कौन आए ना इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कार ना पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ फास्ट स्टेज कहले सेंसरी मोटर स्टेज रे ऑब्जेक्ट परमानेंस आसी थाए तापर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर्स टू ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑप्शन बी डिफरेंस among many individuals option C differences between individual and the group norm and option D is differences in qualities within the individual. The correct answer is option D differences in qualities within the individual. पिला माने there are two types of individual differences such as inter individual difference and intra individual difference. The question is intra individual difference refers to इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस कौन करता है ना द डिफरेंसेस इन क्वालिटीज विदिन द सेम इंडिविजुअल मीन्स वन इंडिविजुअल कहले जड़े व्यक्ति भितर थिबा कैरेक्टरिस्टिक भितर थिबा पार्थक्य को आमे कहूचे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस जड़े व्यक्ति भितर इंटर इंडिविजुअल कहले कौन ना व्यक्ति आउ व्यक्ति भितर इंटर इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल व्यक्ति व्यक्ति मध्य बा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्यक्ति व्यक्ति मध्य थिबा व्यक्तिगत पार्थक्य को आम इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस कही था एवं जड़े व्यक्ति भितर थिबा डिफरेंट क्वालिटीर डिफरेंस को बा पार्थक्य को आम इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोली कही था तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कैलकुलेशन ऑफ IQ द डिनोमिनेटर इज ऑप्शन ए मेंटल एज ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल एज ऑप्शन सी 100 ऑप्शन डी नंबर ऑफ आइटम्स इन द इंटेलिजेंस टेस्ट द आंसर इज ऑप्शन बी क्रोनोलॉजिकल एज पिला माने द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ इज गिवन बाय विलियम स्टर्न ए जर्मन साइकोलॉजिस्ट प्रथमे IQ रो कॉन्सेप्ट किए देथिले ना विलियम स्टर्न देथिले से होचंती कि जन जर्मन साइकोलॉजिस्ट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग IQ scores that is still widely used was developed by an American psychologist David Weisler in 1930 प्रथमे 1930 बाहर करथिले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेविड वेस्लर किंतु विलियम स्टर्न होचंती कॉन्सेप्ट ऑफ IQ रो कौन प्रथमे से बाहर करथिले कॉन्सेप्ट द फॉर्मूला इज IQ is equal to MA by CA into 100 MA कहले कौन ना MA is mental age CA is chronological age. For example, if a person has a mental age of 11 and he is 9 years old, the IQ is MA by 100 MA by CA into 100 that is 11 by 9 into 100 is equal to 122. So this is the formula of IQ MA by CA into 100. So the denominator is option B. Option B होची कौन ना chronological age. बुझी पाइला पिला माने डिनोमिनेटर किए है MA by CA जोटा आम कहे डिनोमिनेटर हूँ CA बा chronological age. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स ओरिजिनली एडवोकेटेड फॉर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लर्निंग ऑप्शन ए हूँ भाइगोर्स्की एंड स्किनर ऑप्शन बी अशुवेल एंड पियाजे ऑप्शन सी पियाजे एंड भाइगोर्स्की एंड ज्ञान ऑप्शन डी हूँ ज्ञाने एंड अशुवेल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी जीन पियाजे एंड ऑप्शन सी पियाजे एंड भाइगोर्स्की ऑप्शन सी कौन अच्छी जीन पियाजे एंड भाइगोर्स्की जीन पियाजे इज नोन एज द फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थियोरी दैट सेज लर्नर्स construct knowledge rather than just passively take in information they construct knowledge. The theory of social constructivism was developed by the Soviet psychologist Lev Vygotsky 1896 to 1934. Social constructivism is based on the idea that learners construct new knowledge. Working with new knowledge involves construction, storage, or putting new information into memory and retrieval. This is the concept of constructivism. Tenu the answer is Piaget and Vygotsky.
The next question is assessment of a personality through research inkblot test is a or an projective technique. Is an dash technique. Dash technique रही ऑप्शन अच्छे ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बी सब्जेक्टिव ऑप्शन सी पॉजिटिव ऑप्शन डी प्रोजेक्टिव. The answer is projective technique. The explanation is the inkblot test was introduced in 1921 by a Swiss psychologist Hermann Rorschach. It is a projective test or technique. The basic idea of this test is that when a person is shown an ambiguous or meaningless image that is an inkblot, the mind will inkblot kale 10 inkblots ri deitile Rorschach. Mind will work hard at imposing meaning on the image. ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲର୍ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍କ କାଳି ଛଟା ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଥିବ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନର ଆଇକ୍ୟୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ Rorschach inkblot test. Inkblot test was introduced in 1921 by a Swiss psychologist Hermann Rorschach. It is a projective test or technique. The basic idea of this test is that when a person is shown an ambiguous or meaningless image, that is the 10 inkblot image, the mind will work hard at imposing meaning on the image. Then next question is a child receives its first education from. ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଚାଇଲ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ମା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି. ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏ ସ୍କୁଲ ଅପସନ୍ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅପସନ୍ ସି ସୋସାଇଟି ଅପସନ୍ ଡି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ. ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ବି family. The family is called our first school and the mother is the first teacher. Who is the first teacher? The mother is the first teacher because we start to learn about things from our family. We learn many things from our family. A school is a place where we learn about things and a family is that first place from where we start to learn. ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ନା ଆମର ପରିବାରରୁ. Let's now discuss the next question, the 13 number question. Which of the following statement is true? Option A, education facilitates modernization. Option B, education and modernization are not related. Option C, education resists modernization. And option D, education promotes dogmatic beliefs to slow down the process of modernization. The correct answer is option A, education facilitates modernization. The explanation ହେଉଛି କ'ଣ ନା education can help to facilitate modernization in a number of ways such as values, critical thinking, character education, school management system. ତେଣୁ education କ'ଣ କରିଥାଏ ନା it helps to modernization. Next question is which of the following statement is true? The first option is society is a subsystem of education. Second option is education is the super system of the society. Option C is the education is a subsystem of the society. And option D, education and society are not related. The correct option is option C. Correct answer is option C. Education is a subsystem of the society because it works in close relation with other subsystems and provides resources for them. Education is also a powerful tool for developing society and creating more capable people. Let's now discuss the next question. Question number 15. An inclusive classroom is one where option A is all types of subjects are taught. Option B होची all categories of students including the deprived sections of the society and the children with special needs study together. Option C is children of the deprived sections of the society are taught separately according to their needs. And option D is only children with special needs are taught separately by trained teachers. So the correct option is option B. All categories of students including the deprived sections of the society and the children with special needs study together. The explanation is inclusive education is a teaching and learning environment that supports all students regardless of their learning styles, abilities or disabilities. It simply means all children in the same classroom in the same school.
कहले जो प्रकार डिजाबिलिटी थाउ ना कहीं समस्ते गोटे क्लास रे एकाठी बसबे एकाठी पाठ पढ़िबे। तापर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। The next question is question number 16. Which of the following is not an implication of the broader meaning of education? पिला माने तुमे तो एटा प्लस 2 रो आरंभ रो पढुछ जे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कोन नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कोन। तेणु ऑप्शन गुडी को अछि आरो which of is not an implication of the broader meaning of education. Option A is all experiences are educative. Option B, education is a lifelong process. Option C, education is that which is received only in the schools and other educational institutions. And option D is society and mass media play an important role in the education of a person. Here the correct option is option C. Education is that which is received only in the schools and other educational institutions. एटा नुहे implication नुहे कारण आमे पिला माने जानिचे जे education is a lifelong process. It is an active process. It can be received from anywhere at any time. तेणु ऑप्शन सी देछि कोन एजुकेशन इज दैट व्हिच इज रिसीव्ड ओनली इन द स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। खाली जे केवल आम स्कूल रु पाउ थाउ एवं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रु पाई थाउ ता नुहे। एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। इट कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम एवरी प्लेसेस एनीवेयर वी कैन रिसीव एजुकेशन। तेणु क्वेश्चन थिला कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लिकेशन। तेणु नॉट जेहेतु अच्छी ऑप्शन सी होची करेक्ट ऑप्शन। द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दैट ए पर्सन रिसीव्स फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट हिज लाइफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू श्री अरविंद द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इज ऑप्शन ए teachers are friends and philosopher of students. Option B, only teachers provide learning to students. Option C, education should be practical in nature. And option D, nothing can be taught. Here the correct answer is option D, nothing can be taught. Sri Aurobindo enumerated 3 principles of teaching. The first principle of teaching is nothing can be taught. Tenu first principle hochi kono nothing can be taught. The teacher is not an instructor or taskmaster. He is a helper and a guide. First option या कहूची। Second principle कौन कहूची ना the second principle is mind has to be consulted in its growth. And the third principle is to work from the near to the far, from the known to the unknown. तेणु अरविंदंकर तीनिटा प्रिंसिपल रही। द फर्स्ट प्रिंसिपल थिला कौन ना nothing can be taught. Second principle होची mind has to be consulted in its growth. And the third principle is to work from the near to the far, from the known to the unknown. पिला माने एमिति मध्य क्वेश्चन बुले किरि पकई परिबो जे the third principle of Sri Aurobindo, the third principle of teaching of Sri Aurobindo is प्रथम पकई देथबो nothing can be taught. second रे थिबो the teacher is not an instructor एमती पकई दिथिबो एवं जोटा करेक्ट ऑप्शन से गुडी को तुम माने कोन करबो करेक्ट आंसर करबो। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थ्योरी ऑफ वैल्यूज इज नोन एज। देखो फर्स्ट गोटे क्वेश्चन आस्थिला जे सेकंड नंबर क्वेश्चन रे मेटाफिजिक्स कोन बोली कि ना एपिस्टेमोलॉजी कोन बोली कि आस्थिला। सेकंड क्वेश्चन जोटा हमर थला जे एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ डैश। पुणी गोटे क्वेश्चन आसिला द थ्योरी ऑफ वैल्यूज इज नोन एज। तेणु ऑप्शन ए इज axiology, option B metaphysics, option C epistemology and option D logic। पिला माने मु सेठी एक्सप्लेनेशन दे देछि भलो भाबरे सेठु मध्ये मन रखिथिबो एठी तार सठिक आंसर तुम बाहर करि पारिबो। आर करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए axiology। axiology रिलेटेड विथ वैल्यूज, metaphysics इज रिलेटेड विथ रियलिटी एंड epistemology इज नॉलेज। आको भलो भाबरे मन रखिथिबो। तापर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not a social aim of education। कोटा social aim नुहे शिक्षार कोटा सोशल सामाजिक लक्ष्य नुहे। ऑप्शन ए इज लर्निंग टू लिव टुगेदर। ऑप्शन बी एक्वायरिंग स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। ऑप्शन सी डेवलपिंग वन्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर। ऑप्शन डी होची पैट्रियोटिज्म। तेणु आर करेक्ट ऑप्शन किए ना ऑप्शन सी
डेभलपिंग वन्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर आउ जो तीन टा ऑप्शन रहिला पिला माने लर्निंग टू लिव टुगेदर कहले आमे एकाठी जेतेबेले बसवास करबा एटा सोशल एम अंडर रे आसुची एक्वायरिंग स्किल्स टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी कहले समाजर किछि उपकार करिया पई जो स्किल बा दक्षता हासिल करबा एटा होची सोशल एम ऑफ एजुकेशन आसुची एवं पैट्रियोटिज्म मध्य सोशल एम रे आसुची तेनु डेभलपिंग वन्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर होची एटा इंडिविजुअल एम दिस इज नॉट सोशल एम The social aim of education is to develop the individual's ability to contribute to the society. Social aim is to make good human beings with kindness, empathy, love, selfless service to our fellow beings. So, एगुड़ा सब होची कौन ना सोशल एम ऑफ एजुकेशन ओनली एक्सेप्ट द ऑप्शन सी डेवलपिंग वन्स इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल पावर intellectual and developing one's intellectual and physical power is a individual aim of education. The next question is Tripitaka is a part of the curriculum in a dash education system. Option A is Sankhya, option B Jaina, option C Vedic and option D Buddhist. The correct answer is option D Buddhist. Tripitaka is composed of three main categories of text that collectively constitute the Buddhist canon: the Sutra Pitaka, the Vinaya Pitaka, and the Abhidharma Pitaka. It was written by Mahakasyapa, the disciple of Buddha and the successor to Buddha. बुद्धंकर डिसाइपुल कहले कौन ना जड़े तांकर शिष्य जड़े डिसाइपुल एवं सक्सेसर बुद्ध पर से कश्यप तांकर बुद्ध धर्म को से कौन करथिले तांकर सक्सेसर कले तांकर पर जे बुद्ध धर्म प्रचार प्रसार करुथिले तेणु त्रिपिटक होची कार ना बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम रो गोटे पार्ट ऑफ करिकुलम तेणु त्रिपिटक तीनटा पार्ट को बुझाई थाए गोटे गोटे होची कौन ना सूत्र पिटक विनय पिटक एवं अभिधर्म पिटक तेणु पिला माने फास्ट पार्ट रे आमे 20टा क्वेश्चन डिस्कशन कले एवं तार कौन एक्सप्लेनेशन कर देछि तेणु एगुड़िक तुम मैंने भल भाव कौन कर ना नोट प्रिपेयर करदेव तुम नेक्स्ट सीपेट जो मैंने दबाक चाहूँ बीएड एंट्रेंस दबाक चाहूँ एवं समस्त यहाँ उपकारी तेणु आगर पीडीएफ डाउनलोड कर बारंबार वीडियो देखिले तुम मन रही क्वेश्चन गुड़िक और एक्सप्लेनेशन गुड़िक एवं पीडीएफ डाउनलोड गुड़े नोट प्रिपेयर करनब तेणु आउ सेकेंड पार्ट रे मु आनिबी आउ 20टा क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन तेणु वीडियो भी भल लगे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिया केबे भी भूलिबनी थैंक यू ऑल।